यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम की थी कि इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ अ पावर सीरीज समीशन ए एन जेड माइनस जेड नॉट द पावर एन in mod z less than r, then the function is analytic for mod z less than r with f dash z is equal to summation n a n z minus z naught the power n minus 1। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ समेशन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी जाएगा, इसे आप करेक्ट कर लेना। इसका हमने प्रूव किया था कि जो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके अंदर जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होगा, तो वहाँ पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। नेक्स्ट थ्योरम जो हमने प्रूव करनी है उसमें हमने ये बताना है कि सभी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स उस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर इस थ्योरम में एफ डैश जेड दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है और एफ जेड वहाँ पर एनालिटिक है मॉड जेड लेस देन आर में। तो नेक्स्ट थ्योरम हमने ये प्रूव करनी है कि फर्स्ट ही नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी ऑर्डर्स, सारे ऑफ ऑल ऑर्डर्स जो डेरिवेटिव्स हैं वो प्रेजेंट होंगे एट ईच पॉइंट इंटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, वो चीज़ अब हम प्रूव करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर भी है, ये आपका 1 से स्टार्ट है। बस इतना मुझे आपको यहाँ बताना था। लास्ट क्लास में जो हमने ये प्रूव किया था तो ये प्रूफ यहाँ पर एंड अप होता है। सो द नेक्स्ट वन इज, दिस इज योर प्रीवियस थ्योरम। नाउ द न्यू थ्योरम इज, if a function f z is the pointwise limit of a power series in some neighborhood of the origin। अब यहाँ पर ओरिजिन आपको गिवन है, जो आपका z नॉट पॉइंट है वो आपका यहाँ पर 0 गिवन है। प्रीवियस थ्योरम में हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी z नॉट को 0 लिया था उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका z नॉट जो है वो ओरिजिन है, दैट मीन्स वो 0 दिया हुआ है। Then f z has derivatives of all orders at each point interior to the circle of convergence of f z। तो हमने all orders के derivatives यहाँ पर शो करने हैं कि वो भी उस सर्कल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो द प्रूफ इज़ बिल्कुल सेम, रिपीट वही प्रूफ है सारा का सारा। आपका एफ जेड ए एन जेड एन है एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और उसके बाद हमने लिखा था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट जेड नॉट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखनी, सिंपली आपका जेड नॉट यहाँ पर 0 है और वापस वो सारा प्रूफ आपको रिपीट करना है यहाँ तक। एफ डैश जेड इज इक्वल टू समीशन एन ए एन जेड द पावर एन माइनस 1। इसके नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी हमने आर शो करना है। ओके, और फिर हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा लेट एफ डैश जेड इज इक्वल टू जो भी आपका यहाँ पर समीशन है एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, बिकॉज एफ डैश जेड के लिए भी आर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और फिर इसी तरह रिपीटिंग द प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आएगा, अप टू सो ऑन। तो हम ये बार बार प्रूफ रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार हम एफ जेड से एफ डैश जेड तक पहुँचेंगे जैसे हमने लास्ट थ्योरम में पहुँचे हैं। वो करने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या स्टेप्स लिखने हैं। सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रूव दैट आर इज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एफ डैश जेड। सो लेट्स स्टार्ट। लेट R1 be the radius of convergence for f dash z। f dash z is equal to summation n going from 1 to infinity n a n z the power n minus 1। अब हम इसका कोफिशिएंट देखेंगे ये वाला। सो
this r1 is equal to 1 over a, which is equal to 1 over this a is limit n tends to infinity सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर क्या होगा एन ए एन। अगर हमारी सीरीज़ ए एन जेड एन वाली थी उसमें हमने ए एन लिया था, मॉड ए एन, आप रिमार्क में चेक करना। हमें हमेशा जेड के कोफिशेंट्स को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। द पावर 1 बाय एन, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, n the power 1 by, since n is positive so just write n the power 1 by n into mod of a n के power 1 by n. This is further equal to 1 over limit n tends to infinity. If you put limit in n the power 1 by n, this is 1, so we're left with supremum of mod of a n the power 1 by n. In the bracket I am writing limit n tends to infinity n 1 by n is equal to 1. You can check this. So this is finally what? This is r, that is the radius of convergence for the series fz, that is summation a n z n. उसके लिए अब ये 1 by a जो है वो क्या है, r आ गया। दैट मीन्स हमारा r1 जो है वो r ही है। सो r इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर f dash z. Now if we repeat the process again, let f dash z be is equal to this summation and r be the radius of convergence. फिर से हम z नॉट को ज़ीरो यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं और z नॉट आपका ज़ीरो है ही। फिर आप उसके सारे बिल्कुल वैसा ही प्रूफ ऐसे, बट हमने वो प्रूफ नहीं करना है, हमने जस्ट एक स्टेप लिखना है। दैट इज़ यू जस्ट राइट, मतलब हम एफ जेड से एफ डैश जेड पर पहुँचे हैं, फिर एफ डैश जेड से हम एफ डबल डैश जेड, दैट मीन्स एफ जेड से फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट से सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन। तो हमारे सारे ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होंगे विद आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ जेड। सो देयरफॉर रिपीटिंग the above process continuously, we get double derivative of fz as summation n going from 1 to infinity. This will be n into n minus 1 an z the power n minus 2. तो बाय सिमिलैरिटी हमारा थर्ड डेरिवेटिव इज समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 an z द पावर n माइनस 3। देखो अगर यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर n माइनस 3 लिखना है, और क्योंकि यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, और यहाँ पर अगर 2 है दैट मीन्स 3 माइनस 2 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 1, ये वाली टर्म लिखनी है। तो सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ केथ डेरिवेटिव चेक करते हैं, एफ ऑफ केथ सेट इज इक्वल टू summation n going from 1 to infinity. This will be n minus 1, n minus 2, so on. This will n minus, जैसे वहाँ पर 3 माइनस 1 2 था, यहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस 1, और जब हम ओपन करेंगे दिस विल बी इक्वल टू n माइनस k प्लस 1 an z the power n minus k. All right. So each expression being valid interior to the circle of convergence of fz. So each expression being valid interior
to the circle of convergence. Circle of convergence. Alright, so this is the proof. Okay, so next is, so here is a remark that coefficients of the power series are uniquely determined and are related to the derivative of fz at the origin by, जो हमारे कोफिशिएंट्स है पावर सीरीज़ के, जो हमारे z के साथ वाली टर्म, जैसे ये an कोफिशिएंट है, तो अगर हम इसका nth डेरिवेटिव एट 0 लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल an. तो इस तरह से ये डेरिवेटिव्स के साथ कोफिशिएंट्स जो है ऐसे रिलेट होते हैं. अगर आपको nth लिखना है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल है, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, ओके, साथ में an जो कोफिशिएंट होगा. नाउ द रिप्रेजेंटेशन fz इज़ इक्वल टू समीशन an zn बिकम्स, तो अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगी, दिस इज n is equal to 0 to infinity. If you put the value of an from here, you will get fn nth derivative at 0 over n factorial into z the power n. What kind of series is this? This is your Maclaurin's series. If you remember, this is your Maclaurin expansion. So this is nothing but Maclaurin expansion of fz. Okay, so next is, let b be any complex number if you take any complex number b, and at b if you take the expansion, that is summation going from 0 to infinity an z minus b the power n. Now this series converges, we know that absolutely for mod of z minus b less than r. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पावर सीरीज an zn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर मॉड z लेस देन r. अब यहाँ पर b कॉम्प्लेक्स नंबर है एट अराउंड b, अगर हम देखते हैं तो हम लिखेंगे उस केस में इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर दिस होल मॉड z माइनस b लेस देन r. So if you put the value for an over here, what you will be getting, this is from 0 to infinity. Instead of an I am writing fn, but now I should not write 0 because at b I am finding, so this will be n the derivative at b, that is the point for the origin, but here it is given that at b, so you write fn b over n factorial from here only into z minus b the power n. Now you remember what the series is kind of this. The series is the kind that is, it is nothing but a Taylor series expansion. So this is Taylor series expansion that is valid for mod of z minus b less than r. Alright, so we obtain two series, that is one is Maclaurin, other is Taylor series. So a remark is again there, you are having your Maclaurin series as this and Taylor series as this. Next, the new term is Laurent series. Laurent series, let z not be a complex number, a series of the kind if you take the limit from minus infinity to infinity of an z minus z naught the power n. This is called the Laurent series at z naught point. Okay, so in this case, if you see that this summation n going from minus infinity to infinity an 1 by z the power n, this is the Laurent series around infinity. If you take around z naught point, then the Laurent series is this, and around infinity the Laurent series will be an 1 by z the power n. Okay, now if this is your Laurent series and I want to separate it, that is one I will take for n strictly less than 0 and the other subseries I need to take from n greater than equal to 0. So there are two subseries. We start n
from, because n is starting from minus infinity, so this is minus infinity up to, this n should be less than 0, so here I should write minus 1, and the other subseries n should be start from 0 to infinity. So the series is subdivided into two subseries. When n is strictly less than 0, then this kind of series, this is your principal part, and if n is positive or greater than equal to 0, this is your regular part of the Laurent series. When principal part and regular part both converges, then your Laurent series converges absolutely or uniformly. If both converges absolutely or uniformly, then this Laurent series also converges absolutely and uniformly. So next, I should write the remark, that is number 1, the Laurent series, that is denoted by LZ, the Laurent series is said to be convergent, is said to be convergent absolutely or uniformly if its regular part and principal part converges absolutely or uniformly. Okay. Second remark is, now this regular part converges inside the circle of convergence, that is, this converges for z minus z0 less than r. If you take your disk at the point z0, the radius of convergence is r. You see that in this diagram, the regular part will convergent in this, that is mod of z minus z0 less than r, and the principal part converges for mod of z minus z0 greater than r. That means outside this disk, principal part converges. So the regular part converges and represents a holomorphic function. What is holomorphic function? This function is also known as analytic function. So analytic function, holomorphic function, one and the same thing. In a disk z0 r, that is converges for mod of z minus z0 less than r. Okay, and the principal part converges, and it also represents a holomorphic function in a disk for z minus z0 greater than r. Alright, that is the outside the disk, not in but outside. Sorry. Okay, so next is, now we do the questions or exercises, examples to solve the radius of convergence. Before that, there is a note.
the radius of convergence of the power series summation an zn is r, then r should be limit n tends to infinity mod of an over mod of an plus 1, which is also equal to limit n tends to infinity 1 over mod an the power 1 by n. So now we have to find the radius of convergence. There are some examples. So first one is find the radius of convergence for the series n going from minus infinity to infinity 2 plus iota n over 2n z the power n. What is your coefficient? That is, take this an is equal to 2 plus iota n over 2 the power n. Then what is an plus 1? सीरीज को देखकर हमें पता चलेगा कि हमने r का फॉर्मूला ये यूज़ करना है या फिर ये यूज़ करना है. तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास n टर्म इन्वॉल्व है तो हम यही यूज़ कर रहे हैं. So this is equal to, if you put n instead of n you put n plus 1, you will be getting 2 plus iota n plus 1 over 2 the power n plus 1. So r is equal to limit n tends to infinity an over mod an plus 1. Don't forget to put mod over here. So this is equal to 2 plus iota n over 2 the power n, 2 plus iota n plus 1 over 2 the power n plus 1. So 2 the power n cancel. If you look at this as 2 the power n into 2 the power 1. So 2 the power n will cancelled out. We will left with 2 only here. Okay. So I'm writing in the next page. That is limit n tends to infinity. Now what is mod of 2 plus iota n? That is a square plus b square under the root. Here a is 2 and b is n. So this is 4 plus n square under the root. Divide by 2 the power n cancel हो चुका है हमारा. यहाँ पर we have left with 2. So this is, now here we have mod of 2 plus iota n plus 1. So this will be 4 plus n plus 1 whole square. So this is 4 plus n plus 1 whole square under the root. Okay. So this is equal to limit n tends to infinity. Taking 2 outside, you will left with 4 plus n square whole root. If you open this, you will get the quadratic expression 2n plus 5. Taking n square outside, you will get limit n tends to infinity. You will get n outside, here also n outside, n cancel. So we are left with 4 by n square plus 1 over 1 plus 2 over n plus 5 over n square. So now if you put limit n tends to infinity, you will get, this is 0 over, this is 0 and this is 0, 1. So your radius of convergence comes out to be 2. Easy? Okay. Next, find the radius of convergence for this series. Now here an is n root 2 plus iota over 1 plus 2 iota n. And an plus 1 is equal to n plus 1 root 2 plus iota over 1 plus 2 iota n plus 1. So again we write limit n tends to infinity mod of an over an plus 1. This is equal to limit n tends to infinity. I am simply writing what is the mod of an. Mod of the numerator is
a square, that is 2n square plus b square root 2, sorry, under the root. So this is mod of 1 plus 2 iota n is 1 plus 4n square under the root. So for an plus 1, this mod will be 2n plus 1 square plus 1 over 1 plus, sorry, under the root. This is 1 plus 4n plus 1 square under the root. When you solve this, you will get limit n tends to infinity. You will be getting this 2n square plus 1 over 4n square plus 1 into, this is 1 plus, okay, can I take n plus 1 whole square outside? If I take n plus 1 whole square outside, I will, this n plus 1 cancelled out. So I'll be left with 1 over n plus 1 square plus 4 under the root over 2 plus 1 over n plus 1 whole square. यहाँ पर भी n स्क्वायर अगर हम बाहर लेते हैं तो वहाँ पर n n आ जाता है, n n कैंसिल, दिस विल बी 2 plus 1 by n and 4 plus 1 by n. So when you put n tends to infinity, I write again, this is 2 plus 1 by n and 4 plus 1 by n. N tends to infinity into root of 4 plus 1 over n plus 1 whole square over 2 plus 1 over n plus 1 whole square. Now if you put the limit, this term is 0 and these two terms are also 0. You will be left with root of 2 over, this root of 4 is 2, root of 4 is 2 and root of 2. So the radius of convergence comes out to be 1. Third one, find the radius of convergence. So again, an is equal to 2 the power minus n over 1 plus iota n square. So an plus 1 is equal to 2 the power minus, this is n plus 1 over 1 plus iota, this is n plus 1 square. So take your r as limit n tends to infinity mod of an over an plus 1. So this is equal to limit n tends to infinity. Now mod of an. So mod, if you see the mod, you will get 2 the power minus n over mod of this is a square plus b square, that is 4 under the root. This is as it is, and this is 1 plus n plus 1 square under the root. Okay, so this is equal to 2 the power minus n, 2 the power minus n cancel, this will 2 raised to power minus 1, तो वो 2 आपका ऊपर आ गया. So limit n tends to infinity, we have root of 1 plus n plus 1 power 4 over 1 plus n power 4 root. Now take n outside and from denominator also take n outside. You will get this limit as, this is 1 over n the power 4 प्लस यहाँ से n बाहर जाता है तो दिस इज 1 plus 1 over n.
the power 4. ओके, डिवाइड बाय, यहाँ से n निकला तो 1 by n the power 4 plus 1 under the root. If you put n is equal to infinity, this term is 0, this term is 0, and this term is 0, you will left with 1 over 1. So this is equal to 2 into this is 1 plus this is 0 over ये 1 रह जाएगा, that is equal to 2. Similarly, this is the exercise for you. Find the radius of power series this. Take your an to be equal to this, and r comes out to be 1. Next, fifth one. Find the radius of convergence for summation 1 over 1 by n z the power n. So here an is 1 over n the power n, and an plus 1 is equal to 1 over n plus 1 the power n plus 1. So now here you use the formula r as 1 over limit n tends to infinity an 1 over n. Okay, now what is your an? Here an plus 1 इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वो नहीं यूज़ करना. अगर आप कर सकते हो वो वाला फॉर्मूला यूज़ तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. सो दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. व्हाट इज़ मॉड ऑफ an? दिस इज़ 1 ओवर n द पावर n, 1 by n. This is equal to 1 over limit n tends to infinity. This is 1 over, जो पावर है यहाँ पर वो ऐसे है तो कट के आ जाएगा 1 over limit n tends to infinity. This is 1 over n. Finally it is equal to 1 over, if you put limit infinity over 1 over infinity is 0, so 1 by 0, which is equal to infinity. But wait, if this is 1 over limit n tends to infinity, this is 1 over n, this limit is 0 and your r, okay fine, you can also write like this. Okay, so this is r is infinity. So next, find the radius of convergence for z the power n over n factorial. तो यहाँ पर आपको r जो है, एक यहाँ पर हिंट है, जब आप r सॉल्व करेंगे, r आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an ओवर an प्लस 1. जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे. उसके बाद आपको फैक्टोरियल ओपन करना है. आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n प्लस 1 n फैक्टोरियल. तो ये दोनों कैंसिल, तो लिमिट पुट करेंगे तो r आपका इन्फिनिटी आ जाएगा. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्योंकि आप पर रूट्स हैं तो यहाँ पर आप an मॉड पावर 1 बाई n यूज़ करना, वहाँ से आपका r जो है 1 आ जाएगा. Next is find the radius of convergence for summation n plus 1 over n plus 2 into n plus 3 z the power n. यहाँ पर भी अगर आप radius of convergence ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सॉल्व करके 1 आ जाएगा. So next is find the radius of convergence for summation n factorial square over 2n factorial z the power n. यहाँ पर भी जब हम आप ये सॉल्व करेंगे r, तो इस स्टेप के बाद आपका यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल आपको ओपन करना है, दैट इज़ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. तो वो फैक्टोरियल और ऊपर वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 2n प्लस 2 भी अगर आप ओपन करेंगे फैक्टोरियल तो यहाँ तक 2n फैक्टोरियल तक स्टॉप होगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो you will be left with this expression. So when you put n infinity, you get the radius of convergence to be equal to 4. Okay, so here I end up your class. So next time we do some more examples for finding the radius of convergence
that are also objective ones which will help you in your UGC NET exam. And plus we also find the radius of convergence, that is plus region of convergence. You have been given a region, about what region your radius comes out to be. So that kind of questions we also do. So thank you for watching this class for the radius of convergence. So do subscribe for latest videos on power series and other more chapters, that is on complex numbers or complex analysis. So thank you.